आपको बराह रास्त ये मनाजिर दिखा रहे हैं ऐवान सदर से। चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफेंग सदर शी जिनपिंग के नुमाइंदा खसूसी यहां पर आए हैं, तशरीफ लाए हैं और उनके एजाज में इस तकरीब को सजाया गया है। ऐवान सदर में चीन के नायब वजीर आजम के एजाज में इस तकरीब को सजाया गया है। आपको आगाह करें कि कल उनके दौरे का आगाज हुआ। कल शाम वो पाकिस्तान पहुंचे। उनके 3 रोजा दौरे में अहम मुलाकातें भी होनी हैं और अहम मामलात भी तय किए जाने हैं और ऐसे में MOUs भी साइन होंगे। और ये दौरा चीनी जो सदर हैं उनके आने वाले दौरे के हवाले से तमाम तर जो इंतजामात हैं उसको भी तरतीब दिया जाएगा। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साथ सदर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको बताएं कि तकरीब चीन के नायब वजीर आजम के एजाज में सजाई गई है। इस्लामाबाद में आप ये तकरीब देख रहे हैं। ऐवान सदर में इस वक्त ही लाइफेंग को हिलाल पाकिस्तान दिया जाएगा। Mr. President, may I have your permission to begin the proceedings of the special investiture ceremony? 总统先生，请允许我开始今天的授勋仪式。 I request Qari Ihsanullah Kakar for recitation from the Holy Quran. 接下来诵读《古兰经》。 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. Neither drowsiness overtakes Him, nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him, except by His permission? He knows what is presently before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge, except for what He wills.
His throne extends over the heavens and on the earth, and he is never weary of preserving them. He is the sublime, the tremendous. Sadaqallahu al-Azim. His Excellency Ha Lifang. 请何副总理起身前行至红毯处。 His Excellency Mr. Ha Lifang is currently serving as the Vice Premier of the State Council. He is also a member of the Politburo of the Communist Party of China. Vice Premier has previously served as Vice Chairman of the CPPCC National Committee, the Chairman and Party Secretary of National Development and Reform Commission of China. The Commission not only organizes the implementation of strategies and plans for economic and social development, but also promotes the joint constitutional implementation of the Belt and Road Initiative. Born in 1955, Mr. Ha Lifang studied finance at the reputed Xiamen University and gained a doctorate in economics in 1998. He began his political career in Fujian province, where he served in important positions, including as the party secretary of Fujian and Xiamen cities. Mr. Ha Lifang later served as the party secretary of Binhai New Area and deputy secretary of Tianjin Municipality and chairman of the Tianjin People's Political Consultative Conference. Mr. Ha Lifang is a great friend of Pakistan and is an ardent advocate of Pakistan-China friendship. As the chairman of NDRC, he oversaw the planning of the 1+4 cooperation model under CPEC, with a greater focus on industrialization and socio-economic development of Pakistan. Under his leadership, NDRC worked with the Ministry of Planning, Development and Special Initiatives of Pakistan for the implementation of major energy, transport and connectivity projects of CPEC. In recognition of his services towards Pakistan and for promoting China-Pakistan Economic Corridor, the President of Islamic Republic of Pakistan is pleased to confer Hilal-e-Pakistan on Mr. Ha Lifang. Mr. President, may I request you to decorate the award of Hilal-e-Pakistan upon His Excellency Ha Lifang. 请何副总理走上授勋仪式台。 Mr. President, may I have your permission to close the investiture ceremony? 总统先生，请允许我宣布仪式结束。 Thank you, distinguished guests. The formal proceedings of the special investiture ceremony are now over. The guests are requested to proceed to Liaquat Hall for refreshment, please. Thank you. सदर में चीन के नायब वजीर आजम को हिलाल-ए-पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब हुई है। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, विफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार और मंदूबीन भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। सदर पाकिस्तान ने चीनी नायब वजीर आजम को हिलाल-ए-पाकिस्तान से नवाजा। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का।